Students, we are going through vectors, okay, and this class is actually serial number V4. V4 माने vector class number 4. आगुरु vector 1, vector 2, vector 3 मु तुम पढ़ी सारछि. Vector 1 and 2 रे basically मु तुम कहितली different types of vectors 1 and 2. 3 रे कहितली components of a vectors. And what do you mean by resultant of addition of two vectors? We are not going to repeat those things. Those are permanently there in the YouTube. Anytime you want, you can see it again. I hope you have jotted down important points from those three classes. आज मु आशा करिबे ए वेक्टर नंबर 4 रे हमे विल स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा. तम पाखे खाता थिबो, पेन थिबो, बसी जाओ. एटा आगुरु मध्य नोट रे अछि तमरो तुमको मटेरियल दिया जाइछि. वीडियो क्लास यूट्यूब रे अछि. बर्तन मु निजे तुमको पढौछि. व्हाट मोर यू वांट. प्लस जदी क्लास सरला परे किछि टिके तुम मन रे संदेह रहला, डाउट रहला, सेटा मध्य आपे आपे क्लियर हो जिवो. यू लेट अस नो व्हाट आर योर डाउट्स फ्रॉम माय वीडियो क्लासेस. Someday I will taken one more video doubt clearance class for you. Okay? Bartan madam manaka bhitaru kei jana madam who are my colleagues in the department, they will be happy to take your doubt clearance class. Tapare mu au dine madhya puni bhavishyat re tomar doubt clearance class madhya nei paribe. To ei rakam bhabare ame age jiba. Okay? Ajikar topic hala V4 video 4 this vector 4 vector algebra. आमे स्केलर विषय रे पढिछु. स्केलर जो नंबर विषय में पढिछु तार अलजेब्रा बा तार एरिथमेटिक रे हमें सब कोन करू. स्केलर को ऐड करू, गोटे स्केलर आ गोटे स्केलर को सबट्रैक्ट करू, गोटे स्केलर को आ गोटे स्केलर रे डिवाइड करू. दैट इज कॉल्ड स्केलर डिवीजन. किबा गोटे स्केलर को आ गोटे स्केलर रे हमें मल्टीप्लाई करू. दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्शन. ओके, से रकम भाबरे वेक्टर में मध्य सेमती हमें करि परिबा. कोन कोन हमें करि परिबा. व्हाट आर द वेक्टर ऑपरेशंस. कैन यू ऐड वेक्टर्स? यस. वेक्टर एडिशन इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. कैन यू सबट्रैक्ट one vector from another vector? Yes. Vector subtraction. Can you multiply a vector with another vector? Yes. That is vector multiplication. Again man rakito, vector multiplication dui bhag re vibhakta. A vector can be multiplied with a scalar. Vector can be multiplied by scalar. हैला ताको मत हमें पढिबा. और vector can be multiplied by vector. गोटे vector को तुम स्केलर रे गुणी करिवो किबा गोटे vector तुम गोटे वेक्टर रे मते गुणी परिबो. एई जो वेक्टर को वेक्टर रे गुणीबा प्रक्रिया, दैट प्रोसेस, arithmetically speaking, algebraically speaking, they divided into two parts. These are very important parts. One is known as dot product. ता कोन कहती? ताकू कहती dot product और ताकू कहती मन लिखा scalar product. मन रखि दियो. That is known as scalar product. Most of the problems in vector depends on the basic concept of dot product or scalar product. आ गोटे होची क्रॉस प्रोडक्ट. ताको कहंती वेक्टर प्रोडक्ट. known as vector product. We will read these two things in detail. Okay? But not today. Maybe after one class we will be dealing those things. Most of the vector problems are dependent on these two things. Then asila vector addition. We'll take up the first case. Vector addition. Vector addition. Vector added with another vector. Vector plus vector. Always you get a vector. You never get any scalar. Vector plus vector always gives vector. That is known as, in my last class I told you, known as resultant vector.
result of addition, resultant vector, or that is called vector sum. This resultant vector or vector sum is a single vector. It has a magnitude, and it has a direction. So if you want to add vectors and find out what is your resultant, treat resultant as a vector. In fact, resultant is a vector. और मैग्नीट्यूड केते डायरेक्शन केते डीटा जिसे जानिले देंकी तमे कोन करि परिबो रेजल्टेंट वेक्टर विषय जानि परिबो. देन वेक्टर एडिशन, it can be done, it can be explained, it can be carried out in various methods. Method 1, there is a law which is known as parallelogram law method. We'll read that law today. There is another law which is known as by triangle law method. One is known as parallelogram law method, the other one is known as triangle law method. There is another law which is known as polygon law method. So there are three laws. You can apply either this law or this law or this law to find out addition of two vectors. Then by component method, actually this is component addition method. Last class में component विषय रे पढ़ी छी. गोटे वेक्टर कंपोनेंट काहा कहंती ना वेक्टर कंपोनेंट होची केतोडे ग्रुप ऑफ वेक्टर्स जो मन को ऐड करले वेक्टर ता में पाई परिबा. गोटे ओरिजिनल वेक्टर अछि. फॉर एग्जांपल मन कर देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज योर r वेक्टर. We'll add it, we'll get it by adding four vectors a plus b plus c plus d, all vectors. तो ये जो a b c d को ऐड करले r मिलेबो, ये a b c d को कहा जाए कंपोनेंट्स ऑफ r वेक्टर. आउथर रिपीट कर दोछि लास्ट में से पढ़ै तले जो वेक्टर वन को मिसै देले मूल वेक्टर मिली पारे से मूल वेक्टर रा ए वेक्टर गुड कहउछि कंपोनेंट्स. उल्टी के कहले यदि हमें केतोडे वेक्टर को मिसैबा ऐड करबा जो सिंगल वेक्टर हम पाइबा a plus b plus c plus d इक्वल टू r वेक्टर. ये जो सिंगल वेक्टर पाइबा ए सिंगल वेक्टर को कहा जाए रिजल्टेंट वेक्टर. सो let us read parallelogram law method in details. I have just told you that when you add a vector with a vector with a vector, then you get a single vector which is known as vector sum. And there are various methods. One of the method is parallelogram law of vector addition. Then we must state the law. Law ta to state kale statement ta bada hobo. प्रथमे तुम हठात करी से स्टेटमेंट ऑफ कैप्चर करि परिबनी किंतु परे धीरे धीरे विदिन मिनिट्स you will be acquainted with that law. What is that law? If two vectors acting simultaneously, how many vectors? If two vectors acting simultaneously at a point are represented, what a vector का मैं कैसे represent करिबा? In magnitude and in direction. गोटे वेक्टर को तुम जे रिप्रेजेंट करबा गोटे सरल रेखा द्वारा गोटे ट्रायंगल रो बाहु द्वारा साइड द्वारा, यू मस्ट बी श्योर that that side represents the magnitude of the vector and direction of the vector. Okay, so एटी देखो there are two vectors. One is your a vector and the other one is your b vector. A vector direction here है, B vector direction is here. But they must act at a common point. कौन हमें करेगा? Let us choose O as the common point of their action. But now we go for shifting of vector. एक वाला vector आपको shift कर देखो. Shift करे माने वहाँ direction shift वो तारो direction को change करी बनी, तारो magnitude को मतलब change करी बनी. इट्स रखिले इटा को vector A vector आसे देखो आइला एठी आसे पछला ये जति की ये जति तुम जो नोट दिया जाई छी से नोट रे आ ना दिया जाई छी EF. ओके आ ना दिया जाई छी GH. तुम जब शिफ्ट करके कोन कलो ना एठी के आनी ओ बिंदु रे ए वेक्टर नि स्थापन करो. तो सेटा कोन है ओ वेक्टर दिगला ना दिस इज द वेक्टर OA गोटे वेक्टर आरो देली और आपको कहली A vector.
So A vector, which was your EF, is now shifted and it is placed along with O A. किसी असुविधा नहीं. ताले B vector थिला एठी देखो B vector आको मु शिफ्ट करिबी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन चेंज करिबी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करिबी नहीं आको आडली एठी आसी मिसी. सो ओ बिंदु रे मु आर वेक्टर कानी मिसी देली एठी वेक्टर चिन्ह देले आको मु कोन कहली. सो दिस इज माय B vector. Now you see A vector, B vector are two given vectors. Now they are represented by two sides of a parallelogram. Parallelogram नाटा कौन OA BC. गोटे साइड है OA जोटा कि A vector represent करूची आ गोटे है OC कोटो represent करूची B vector represent करूची. Now these two vectors they are acting at the same point O. यदि सेया हला बात पढ़िली if they are represented in magnitude and direction by two adjacent sides. It adjacent है नहीं गोटे A गोटे B two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant A plus B is represented by the diagonal of the same parallelogram O to B passing through the common point O. तो नेटे में लिखिए A vector plus B vector विषय कौन रिजल्ट मिलला ना R vector এবং সেই R vector টা কার দ্বারা সূচিত হলা diagonal कोटा OB and this is your R vector. R magnitude कहते हैं O to B, direction कहते हैं O to B एवं so the diagonal of the parallelogram passing through that point. parallelogram में दीटा पाए कौन सा है diagonal था गोटे होची एपटे अछि गोटे एपटे अछि एटा नो. The diagonal which passes through the common point represents the resultant vector R vector in magnitude and direction. I think you are very clear now. I repeat, ताको न देखि मु कहूची if two given vectors A and B are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and in direction, then their vector sum, which is your R vector, or the resultant which is your R vector, is represented in magnitude and direction. आपको छाड़ी बनी in magnitude represented in magnitude and direction by the diagonal of the same parallelogram which passes through the common point of the action. Common point of action is O. O दे को parallelogram को diagonal जाइए O to B. तो O A जब A vector है ला O B O C जब B vector है ला तो R का कोटा हो ना O B हो. All these things are represented in magnitude and directions. Okay, so this is the statement and this is the figure. I think you can understand. Okay, no doubt, nothing problem. Students, we have just stated the law. Which law? Parallelogram law of vector addition. This is the statement. Okay, then depending on this statement, let us use this statement and find out the resultant or the vector sum. Our two vectors are, as you said, it is your P vector and this one is your Q vector. मो संगे तुम जदि अंकन करिवो तले आउरी तुमको भल लागेबो and we are going to add it. So P vector plus Q vector, let it be R vector. Co-vector R vector. Then we have to represent these two vectors by the two adjacent sides of a parallelogram. Our parallelogram we have taken here A, B, C, D. Side AB represents P vector in magnitude and in direction. देखो, it was a vector मु shift कले parallel method रे shift कले एटी ऐसे पहुंचला. So R magnitude तार magnitude समान, R direction तार direction समान, तो एटा मोर हला P vector. एटा देला P vector, एटा भी हला मोर P vector. तबरे एटा देखो, this was your Q vector. आको मु शिफ्ट कले एटी आली पहुंचे देले एवं एटा हला AD को वेक्टर रिप्रेजेंट कला ना Q vector. So ABCD is such a parallelogram. Its two adjacent sides which are AB and AD represents P vector and Q vector in magnitude and direction.
आज ये छोट क्लास भितर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को प्राय अति कम 10 थर मु उच्चारण कर सारे कारण तुम कभी भूल कर देन व्हाट इज योर आर वेक्टर व्हाट इज योर आर वेक्टर एटा मु लिखि दोछि योर आर वेक्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ योर आर वेक्टर is given by the diagonal of the parallelogram it is the diagonal na kon a to c and it represents the resultant or vector sum r vector. Okay, our job is to find out what is the magnitude of r and what is the direction of r. ता पई के हम सही parallelogram law पर डिपेंड करिबा डायरेक्शन कोन करिबा ना डायरेक्शन होचे एटा let us define an angle तुमको जो मटेरियल दे दै छी से मटेरियल टारे ए कोण निया जाई छी फाई अनेक जगह अल्फा निया जाई परिबो कोड थीटा निया जाई परिबो ओके the angle between two vectors p and q let us say that is your theta सेटा कहते हैं what is theta theta is equal to angle between given vectors p vector याड को एवं सियाड को and q vector मन रखिता ओके what is your phi is equal to angle between the resultant r vector and एकड़े को वेक्टर अछि को वेक्टर p वेक्टर ए दीटा एंगल को केबे भूलिबो नाही एटा को मो ए ना लेले ए पई कि जे तम नोट रे मोस्ट प्रोबेबली ए रकम सिंबल्स यूज करा है ओके एबर आउ कोन हला एटी मन रखि था दैट इन द फिगर AB vector is equal to which vector p vector एवं AD vector is equal to q vector ताले resultant r vector according to the law is your AC vector हमें एटी प्रश्न चिन्ह देबा AC रो मैग्नीट्यूड केते और AC रो डायरेक्शन केते ओके वर्तमान कोन आगेबा एटी किछि कंस्ट्रक्शन दरकार कोन दरकार एटी ना एटी किछि कंस्ट्रक्शन दरकार वो ए सी बिंदु रु एटी ओडा लंब पाथ करबी बी टा को एक्सटेंड करबी एटा कहबी एम एटा कोन कहबी एटा कहबी एम ओके सो एटी किछि कंस्ट्रक्शन करबी कोन कंस्ट्रक्शन करबी एटा को या कंस्ट्रक्शन करबो कंस्ट्रक्शन drop perpendicular एटा होची perpendicular CN from को बिंदु from C on extended AB लंबा पकेले AB पर तो पड़िबनी तमे AB को बढ़ेइबो मु बढ़ेइ देले ओके नाउ देखो ए कोनटा होची ए बाउटा ए बाउटा समांतर तो एटा देला q आर मैग्नीट्यूड q तो ए रो शिफ्ट करिवो शिफ्ट करी ऐसे का से कोइंसाइड करि गला b से संगे एटा मध्ये को वेक्टर हे जिवो ना दिस इज योर q वेक्टर ए q वेक्टर मैग्नीट्यूड केते खाली q एवं डायरेक्शन केते b रो से देखो एटा जो कोण अछि ए कोणटा के थीटा और ए कोणटा मध्ये तमरो हे गला थीटा ओके एटा होची राइट एंगल ट्रायंगल काहे कि ना ए कोण होची 90 डिग्री हमें बतन से राइट एंगल ट्रायंगल को जीवा एवं जाई कि कोन करबा ना जा करिया कथा ना अरिथमेटिकली करबा देन लेट अस सी in the right angle
triangle, in the right angle triangle, co-triangle CBM. CBM. Hela. Amaro sin theta hochi kete. Sin theta is equal to perpendicular P by H is equal to CM. Now let us do it in another way, not like this. It will take a roundabout ratio. Let us take the angle CAM. Please reset your mind. CAM, co-angle CAM in the right angle triangle AC square, corner square is equal to भूमि square युक्त लंब square. भूमि कहते हैं AM square युक्त CM square. किसी डाउट रहे उचित नहीं, खाली डाउट अच्छे बोली कहले हबनी. You go into the derivation, physics, analysis part. So this equal to this, and what is your A to M? AB plus BM. So this is your A to B plus B to M tar whole square plus CM square. Okay, then this is equal to AB square plus twice AB dot BM plus BM square plus CM square. A square plus B square plus twice AB. Very simple. And this is equal to AB square plus twice AB into BM plus BM square. What is BM square? BM square plus CM square. भूमिर वर्ग जुक्त लंबर वर्ग सो काय वर्ग हबो कर्णर वर्ग हबो तो कर्णटा केते हला योर BC square. This is equal to BC square, or you can write down ऊपर लिखुची, or you can write down AC square is equal to AB square plus BC square plus twice AB into BM. This let us say this is your equation 1 in your material. Okay, am I clear? Now I think this is very clean and clear. Okay, then we will proceed further. Students, we are now going through the derivation of an expression for resultant of vector sum or vector sum of two vectors. मु कहिछि मूलरु जेटा वेक्टर मिसै देले तमे कोन पाइबो, तमे वेक्टर रिजल्टेंट पाइबो बा तमे वेक्टर सम पाइबो. आमे जोटा करबे कि r नी. ओके, नाउ देखो हमर इक्वेशन 1 कोन आस्थिला AC square is equal to AB square. AC square is equal to AB square plus BC square plus twice AB into BM. Now in the right angle triangle, a triangle, I mean cos theta. Cos theta is equal to base by hypotenuse. Base is kate BM and hypotenuse kate BC. So this is very clear. कार किसी doubt रहे अच्युत ने cos theta equal to B by H. B by H. I repeat, cos theta is equal to B by H. And what is BM? अतः BM is equal to BC cos theta गुणित BC cos theta. Now from equation 1, I am writing this equation again. Okay. AC square is equal to AB square plus BC square plus twice AB into kate achi BM. What is your BM? BM is BC cos theta. What is your BM? BM is BC cos theta. BM पे kate लिखी थी BC cos theta लिखी थी. So equation 1 is now your equation 3.
It is your equation 3 and this is equal to AB square plus BC square plus twice AB खाली BM जगह रे हमें लिखा है BC cos theta. बर्तन it is a magnitude. मन रखिए these are the magnitudes of the vector. Then let us substitute magnitudes in equation 3. कौन है ना AC रो magnitude कहते देखो A रो C. A रो C कहते magnitude R vector तो magnitude कहते ना R square. A B होची कहते ना P तारा magnitude कहते P square. BC होची कहते BC रो magnitude जहाँ AD रो magnitude से because this is parallel to this, so इटा देला Q तो इटा मध्य हला Q, so Q square. Then AB हला P and BC cos theta कहते हला ना BC is equal to Q, BC is equal to Q, इसमें Q लिखिले एवं cos theta लिखिले. If R square is equal to P square plus Q square plus twice PQ cos theta, तो R कहते हैं वो R will equal to P square plus Q square plus 2 it is Q छाड़ दीजिए, I'm sorry, 2 PQ. So this is P square plus Q square plus twice PQ cos theta root over, and what it gives? This is magnitude of R. And what is your R? R is the resultant vector. I think it is very clear. Our job is to locate the resultant, which is your R. Its magnitude is from A to C, and the direction is from A to C. Making an angle, the direction makes an angle phi with your P axis or P vector. Okay. I mean, say to हमें define करो, पर हमारे काढ़ीबार अच्छी कौन काढ़ीबार अच्छी? We have to find out direction of R vector. Okay. So let us define phi. Phi is the angle between R vector and P vector. देखो, this is the angle. This is the angle between this and this. So phi is the angle between R vector and P vector. No problem. Then let us look at the right angle triangle. There are two right angle triangles. One is CPM, it is a right angle triangle. But a CAM, it is also a right angle triangle. In border right angle triangle ta ACM. कोड लिखा थी वो CMA. कोड लिखा थी वो CAM. वो लिखी थी ACM. Tan phi. A right angle triangle tan phi था उसी perpendicular and the base. What is your base? A to M. So tan phi is equal to CM by AM. Right? What is your AM? I'm going to call it AM is equal to AB plus BM. Your BM. Okay, what is this BM? Once you find BM, then you can substitute the value of BM in this equation. Now in the triangle BCM. Look, BCM. Don't get confused. The second right angle triangle BCM sin theta. Eta जो theta एक कोणटा eta जो theta. Okay. Eta जो parallelogram रो ए बाहु रो बहिस्थ कोण eta होची अंतरस्थ कोण. Theta is equal to this theta and sin theta is equal to P by H, perpendicular by hypotenuse. So that is equal to CM perpendicular and BC. ताले CM कहते हैं CM is equal to BC sin theta. It is going to be BC sin theta. So this is the value of your CM. Then in the same triangle cos theta, I am going to carry such. Cos theta is equal to base by hypotenuse. Base by hypotenuse. Base is BM and this is your BC. So BM is equal to BM by BC cos theta. Now you can substitute the value of CM from this equation and value of BM from this equation. So that means we have to introduce the value of theta. What is theta? Theta is the angle between the given two vectors. So your tan phi is equal to CM पे कितने को लिखेंगे? BC sin theta divided by
AB को AB लिखिबी प्लस BM ପାଇଁ केता लिखिबी BC cos theta BC cos theta no problem ओके बर्तमान मु मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट करिबी लेट अस use magnitudes of कार ना AB magnitude P BC magnitude ना Q magnitudes of AB and BC करी पाइल ना नहीं ताले मोर कौन भारीबो ना I will get tan phi जो BC पाई केता लिखिबी your BC is कहते हैं magnitude Q tan phi is equal to Q into कहते लिखिबी sin theta divided by AB पाई कहते लिखिबी AB कहते magnitude P plus Q BC पाई पूर्ण लिखिबी Q cos theta or your phi is equal to tan inverse Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So it gives direction. Eta dekhala magnitude. It gives direction. Direction of R vector by phi. And what is phi? Relative not to Q, but relative to P vector. Direction R vector relative to Q vector. So these two are important expressions. One gives the magnitude, car magnitude, R magnitude, and this gives you phi. Phi is the direction of R vector. And P vector जोड़ा ची सेम टू phi कोण पहले A direction तम पाइबो magnitude and direction. So this is how you find out the value of R vector in terms of magnitude and direction. देखो पिलावने we have taken up this figure P कोण Q कोण तुम जानी छो P एवं Q को मिसा होला कोण होला थीटा रेडियन होला R रो डायरेक्शन P स्क्वायर कहते हैं phi R equation होला एतिकी tan phi equation होला एतिकी किंतु देखियो this is a very free diagram सबुटी खाली एटा P सबुटी एटा खाली Q सबुटी एटा खाली R एमती दिया ही नथिबो so there will be different symbols actually तम नोट तुम जो दिया जाई छी मटेरियल दिया जाई छी इच्छा करी ए पैरालेलोग्राम को अलग प्रकार ना दिया जाई छी एटा दिया छी A B C D एटा दिया छी O A B C और ए गोटे वेक्टर को रिप्रेजेंट करछि को वेक्टर थिला ए रु बी जोटा थिला और ए रे को वेक्टर थिला p वेक्टर जोटा सही फिगर रे p वेक्टर थिला मन लिखि लेट p वेक्टर इज इक्वल टू व्हिच वेक्टर p वेक्टर इन दैट फिगर इज इक्वल टू a वेक्टर इन दिस फिगर এবং এটি को वेक्टर थिला q वेक्टर एटी को वेक्टर में यूज करलो b वेक्टर तो एटी कोन हला ना q वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर तो एटी एंगल थिला D A B एंगल केते थिला थीटा એટલે C O A एंगल केते हला दिस एंगल इज C O A सेटी भी थिला थीटा एटी भी थिला थीटा सो यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेट सिंबल्स इच्छा करी कि तम सिंबल रे एमती कर दियै छी तुम ए सिंबल रे कंटिन्यू करता तो बाद में एठी आस्ता ताले फॉर्मूला कोन हेता if P plus Q was equal to R एठी अब A vector plus B vector को मिसै देले A plus B मिसै देले कोन रिजल्टेंट बनला R vector मैग्नीट्यूड केते आसीबो तारा the magnitude of R vector is P square plus Q square P square plus Q square is equal to first square plus A square plus B square R is equal to A square plus B square plus एथिला P into Q 2PQ it is equal to AB so this is twice AB
एवं इट आसला cos थीटा तार रूट ओवर सो दिस इज द मैग्नीट्यूड I think you understand this now we will go for direction students for problem purpose and to be well acquainted with notations in different books we are adopting a different symbols जो वेक्टर थला p एठी हमें केते नेलु a जोड़ थला q हमें केते नेलु b जोड़ थला थीटा हमें सही थीटा लेलु r को r रहिला एवं मैग्नीट्यूड हे गेला दिस इट वाज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस 3q cos थीटा p जगह a लिखिली एवं q जगह b लिखिली सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a cos थीटा तमे खाता रे आको जेना प्रैक्टिस बडा के लिखि देले ओना माने तुम भलो भाबे आको बुझि पाबे तापर एक डायरेक्शन पे एटा कोन लिखि फाइ जगह हम कोन कले एठी मु नेली अल्फा कोन नेली अल्फा ने तल अल्फा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर सो इट इज ला tan phi इट इज ला tan अल्फा इट केते इज ला q sin थीटा q पे केते लिखाई छी b सो दिस इज इक्वल टू b sin थीटा बाय इट थिला p plus q cos थीटा इट p पे हमें कोन नेलु a so a plus b cos theta or alpha is equal to tan inverse b sin theta a plus b cos theta either you can follow these symbols or you can follow this symbol एठी आ गोटे कथा रहिला जे अनेक जगह देखिबो ए एंगल ता न देकी the angle between r and a एंगल ता दिया हितिबो एटा को एंगल r and b एटा होची बीटा कोन तम कहबा ताका हम कहबा बीटा एटा मु लिखै देली एटा लिखै देली लिखले alternatively for direction let us choose beta a different angle alpha was the angle between r and a beta is the angle between not r and a but r and b beta is the angle between r vector and b vector हला एटी अल्फा बार चला सेटी केवल भाईबो then tan beta it is alpha consider tan alpha is the angle with a so the formula started with b tan alpha equal to b into sin theta divided by a plus b cos theta एटी कोन हो tan beta is equal to angle with b जो एंगल सेट का हमें डिफाइन जो साइड से हम डिफाइन करते हो फॉर्मूला लिखते हैं r साइड का रखो अल्फा इज द एंगल बिटवीन r and b r साइड का केते a तो सेटा केते हिजो ना a sin थीटा बाय a जगह b जगह a एटी केते लिखाई छी a सेटी बाय कोन लिखिबा b plus a cos theta आको बराबर मन रखि दबो हैला एई बाउ सहित कोन जदि अल्फा हला तले a का b रु आरंभ हो b sin थीटा डिवाइड बाय a plus b cos थीटा जदि एई एंगल ता b संगे रहितिबो त फॉर्मूला आरंभ होउथबो ना a एटितला b sin थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा एटितला a plus b cos थीटा डिवाइड b plus a cos थीटा तेनो तमे एतक आगे मन रखि कि प्रॉब्लम करिया को आगे जाओ मु मध्य प्रॉब्लम करिवे तापर आस्ते आस्ते आको सब लेख जा बोर्ड रे जे लिखिली यू हैव टू राइट इट ट्वाइस और थ्राइस तापर देखियो सब इजी है ओके